मेरे काम का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है, गिलगित का प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आईएस में भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पर शिरकत करें, पाकिस्तान से बैठ के हम यूएई में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। So speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If we can please have the slide. So in the meantime, when the slides are displayed, I could probably engage you that you might have heard the word Industry 4.0, and the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided into four paradigms or four periods in which science has prevailed in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing will actually work, because what do we do with all data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decision, then what's the use of having that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical sciences, research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world of today is perceived as most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and presenting it in a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world, and that is most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, of the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they've already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on a wingman flying with real pilot, and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the Loyal Wingmen basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from space algorithms, it can come from logic-based algorithms, and it can come, some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of problem, in what way. For this reason, what you just said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? The more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually gives the manifestation of good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being great and my being able to talk to you free, can tell you a little bit of the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component which is today is with four keynote speakers, two of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and also Dr. Shamsi, very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have a presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented. So great effort done by Depot and C4I with some input from the National Center for Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies that are useful, in the form of, including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as there's the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally, the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market dynamics, and trend analysis. Next, please. Next.
Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade when school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics in 2009 at NUST after my PhD from Japan. This is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates CI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on your left and right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side, and they're completely like playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with pre-trained algorithm which we actually train inside the robot, and they work by themselves to realize where the other robot, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we have made for wheelchairs of Japan, and there are other projects. For example, this prosthetic hand project which we worked with AFI, and this one has tactile sensation which actually gives back feedback to the humans. And actually, on 2 of these, like soft grasping and the hand projects, we won best paper awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also a FIRM actually. So this is an adaptive leg which actually adjusts the walking speed of the person. So a lot of other things like that. This is the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistan universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, come forth and look at research, looking at back the work. They have funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. Then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there, and we've also awarded 1,200 projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We have to do AI and a lot deployed in the real world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance, we see that the potential impact of artificial intelligence, this saying from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add $15.7 trillion to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is dual purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the invention of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. Another saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I actually took from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually sent to the UN. This is like the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever, time scales faster than human can comprehend. This is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go behind, completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with complete autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Russia with Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal project, autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show pictures of naval systems here, but our autonomous ships, there are submerged vehicles too. So helicopters, this one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the Alias. Also are like land machines also. This Mars project, for instance, this Black Helmet, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the war strategy, and they actually also not at just this level, also the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So tactical level also, all these things integrate together, and there's a tactical framework as well with which you can actually, using the governance framework, you actually apply artificial intelligence towards the strategy as well. Next. So there are, of course, drones are an example in which artificial intelligence has been applied extensively, and there are so many examples in drones like
several of them are teleoperated, but the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the application areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments, like shown you some of the machines that work autonomously in the battlefield. But it goes well beyond that, actually, some of which we will see as examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures are there are unmanned aircrafts. There's a formulation of the governance of artificial intelligence governance framework and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tank and UGVs. There are like multi-aircraft navigation and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these auto machines are because of an error, and how we can improve on that using artificial intelligence, right? So AI extends much beyond, the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if we look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is this export promotion. So if we look at that, the market is expected to grow at an annual compound growth rate of 30.4% annually. So this is according to Evergen. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed, looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for hardware industry. So if you look at, for example, the global market shares, it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But it is so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. And actually, Forbes did a famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese ability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technology. So hardware and software both. Next, please. There are other statistics as well. For example, in case of the Newswire, they say that the growth rate is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other things which I did not include in this presentation. For North America, for certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's likely huge growth. Wherever people are coming, apply artificial intelligence in the industry, so huge growths are expected there. So this is what I was talking about. That apart from the development of autonomous and intelligent weapons, it is like the efficient information, you would say, retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming, back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligent sensing to leverage better situational awareness. And once you have situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne and naval assets into a battlefield management system to leverage technical capabilities. So this is, also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, I think PS and Taik will relate to it very much. The way that this AI works is that at the bottom level, there's infrastructure for. So like this is hardware as well as the core software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor network. You require, this can be mobile, this cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that a lot of applications which are application areas that make it to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also applicable to domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity will be the same, even though it's applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated to cooperate with each other. And we actually want to use this scenario for machines in the, for example, tanks in the battlefield or aircraft in the air, actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real scenario. So if you look at, for example, sense in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 1.6% firms are investing in the data science area. 7.8 in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry,
This is particularly aerospace-related defense industry. Otherwise, applications defense are in all, for example, computer vision. So many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing, and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side, and of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts, the proposals that generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed reach around that. So we just were inaugurated in March 2018. The first financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just the 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This is useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is digitized data from the 70-year history of Pakistan. Whenever a new case, for example, comes in, you can enter some facts about that case into the system. And the most relevant is from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And when this is made directly by the judge himself, AI, of course, does right now the system AI does not suggest judge. So, but even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just go quickly through the slides. Working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the SENAI, and we have good collaboration. Next, please. Next. This is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a Medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels. You see, we know that fifth generation warfare is actually not just in the battlefield in every home, right? With the digital devices and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, and all the content analysis behind it, giving you a complete summary of whatever is happening in the desert. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off in companies like the last one. And this one, for example, is a system where we, for example, detect various vehicles. Some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for tickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a special vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, which you can detect weapons, for instance. This is detection. You're detecting weapons, and on the left and the right you can see activity recognition. So for example, one person is crossing in a different side, not in the direction where everybody is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So you can actually predict with a lot of accuracy whether somebody is doing something different from the crowd. So this is mob analytics. Next, please. So this is example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever person, for example, are holding are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detect a weapon only may not mean a lot. So something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition, and when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So it's like just a from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safety Authority, and I'm happy to share with you that recent last year, in one of the very major events that was taken in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence face recognition technology, using our home developed system. Actually, please. So these are medications. One system that we've developed for thalassemia detection, assessment, another for breast cancer. Next, please. These are two other systems. Brainwaves is a very popular system for brain, tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually, I think day before yesterday, our system deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative which, for example, you don't know about the AI Tech competition that we organized. So this is initially was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ADS, and it's going to be scheduled inshallah in the coming February. Inshallah. So if you want, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1 million this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer prize money for the one who does the best product, you're welcome to contribute. And otherwise, also you're welcome to. Next, please. Also, to address the need of the defense market and particularly the shortage of human power,
which would actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence program, the CIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. 2 minutes, sir. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you are very much welcome to do that. I got the reminder, so this is why I really after the things. Thank you very much. I hope you enjoy the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एविएशन। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उसी तरह पे जा सकें। मेरा तरफ उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड्स डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़, एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे, बट देन विद द passage of time they have become good for this event, and mashallah इतने अरसे के अंदर they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan। बहुत अच्छा काम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद इकबाल तिरमिज़ी। मैं इंट्री ब्रेड को लुक आफ्टर कर रहा हूँ यहाँ। मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ, और हमने कल से ये स्टॉल यहाँ लगाया है, और हमारी कंपनी को भी तकरीबन 2 महीने हो गए इंट्री ब्रेड, और हम कराची को काफ़ी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। हम हाइजीनिक ब्रेड कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ब्रेड हम बना रहे हैं, जो कि प्लांट पर तैयार की जाती है और हाइजीनिक सिस्टम के तहत तैयार की जाती है। इस वक्त इतनी अच्छी ब्रेड कोई नहीं बना रहा, क्योंकि हमने कोरंगी में कंप्लीट एक प्लांट लगाया जो हम ब्रेड की तमाम ब्रेड तैयार कर रहे हैं और कर रहे हैं। एक्सपो में हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमने सालों पे यहाँ पर स्टॉल लगाया था और अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उसी को देखते हुए हम जो है अब दोबारा यहाँ पर कोशिश की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है। जो पब्लिक जिन्होंने यूज़ किया या जो हमारे एंड यूज़र हैं मार्केट में जहाँ पर, उनको भी बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स पसंद भी आ रही हैं। और एक्सपो के साथ काम करने में ये हो कि यहाँ पे वर्किंग करने से जो जिन यूज़र नहीं मालूमात होते हैं और वो इसको ट्राई करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि हम एक्सपो के साथ यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। बदर एक्सपो के बाद कहूँगा कि उन्होंने जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और जितना वो कोऑपरेट करते हैं, हर मतलब हमेशा लगा कि वाकई हम परेशान नहीं हो रहे हैं। तो उनकी ये काविश काबिल है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनका कॉप है हमें नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों में हम से कुछ कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा, और आज जो है मैं बचत एक्सपो में आई हुई हूँ, एक्सपो सेंटर कराची में। तो यहाँ जो है काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। ग्रोसरी के स्टॉल्स हैं, फूड आइटम के स्टॉल्स हैं, कॉस्मेटिक्स है और कपड़े वगैरह हैं। तो काफ़ी अच्छी एक्सपो लगी हुई है, और इवन के यहाँ पे 50% ऑफ भी दे रहे हैं हर चीज़ों पे। तो ये जो है ईद भी करीब है, तो आप लोग आए, विजिट करें, और डिफरेंट स्टॉल्स को आपको बहुत अच्छा It's 4 p.m. Hello, greetings. I'm Parvez Madraswala. I'm Director at Powerhouse Private Limited, and we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is always here in Karachi.
by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefits the industry and gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and FIT are excellent and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products so that we can get benefit and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE for organizing such great exhibition as they always do, and we see that this again we will meet all our business leads and our customers and different people who are going to attend this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you. जो हम जा रहे हैं एक्सट्रीम शूटिंग ये हैंड गन का होगा, पिस्टल के साथ मारना बात है, ये उन लिए है। एक तो हम के तो हम करते रहते, ये एक प्रोफेशनल जो दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में, पाकिस्तान में कहे जा रहे हैं, हमारी टारगेट बाहर के मुल्कों में ये इवेंट खेलने के लिए हमने कहा कि जो चीज़ होते हैं लेट्स विन अंडर ऑर्गेनाइजेशन बैनर, और हम उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी सबसे खास ये है कि यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, वो नेवी है, आर्मी है, रेंजर्स है, एएसएफ या इवन जो बाकी प्रोविंस की जितनी पुलिस है, कमांडो, इन सबको हमने क्या है कि वो स्किल्स के साथ जो अपने प्रोफेशनल शूटर्स वो आके इस हिस्सा लें। काबिलियत को सामने रखते हुए इसमें सबको ओपन चैलेंज है और हमने कुछ खास इनामात रखे हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज रखे। उसके अलावा जब हम ये अरेंज करने जा रहे थे तो यूनिवर्सल तो हम शूटिंग सिविलियन जो थे जो बेहतर शूटर्स हैं कि हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हमने सिविलियन कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने भी सिविलियंस हैं जिनके लाइसेंस वेपन है वो अपने शूटिंग जो स्किल्स है आजमाएं और इसमें एक ओपन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें। एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+ हमारी वुमेन की आबादी, तो खवातीन के लिए हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है। इसमें जो भी खवातीन शूटर्स जिनकी वेपन हैंडलिंग बेहतर है या जिनको लाइसेंस वेपन है वो आके इसमें हिस्सा लें और इसमें भी जो स्किल्स उसको आजमाएं। तो ये हमने इन 6 सेप्टेम्बर को डिफेंस डे पे रखा, मगर क्योंकि चिलम का मौका है और इसमें तमाम हमें लोग मसरूफ़ हैं तो हमने इसको 9 सितंबर पर लेके गए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स हिस्सा लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट है वो बाहर जाए और ये हम दिखाएंगे कि पीसफुली लोग यहाँ पे बेहतर तौर पे इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से, पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उन सपोर्ट के साथ इसको कर सक रहे हैं और इसमें जितने भी लोग हैं सबको मैं इन्वाइट करता हूँ कि हिस्सा लें और इस पे मैं शुक्रगुजार एक्सपो का उनकी का वो इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प है और इसको हम एक स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और ये जब हम इसको प्रोजेक्ट करें तो बेहतर तौर पे हम के में इसको दुनिया के आगे रख सकें। थैंक यू। बताइए कितनी बड़ी कंपटीशनशिप में कितने इसमें जो शूटर जो है शिरकत करेंगे उन तक 1 डे कंपटीशन है, सुबह 9 बजे शुरू, शाम को 5 बजे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके अंदर जो लोग ना सिर्फ ये जो हिस्सा लेने आ रहे हैं, जो उनके साथ गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है, जिसपे पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हम रखा है ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मान नवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उन लोग इसमें हिस्सा लेंगे वो जो देखने आएंगे। तो ये भी एक सॉफ्ट मैच है जो कि हम पेश करेंगे आगे। नेक्स्ट कंपटीशन हो रहा है, ये सिंध की रवायत के से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने पीने। इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60+ लोगों ने रजिस्टर किया है, तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और लोकल
ये वो लोग हैं, ये यूनिफॉर्म पर्सन। उसके अलावा सिविलियन कैटेगरी मिला के टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने तो अपने आप को रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम उनको मेडल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे। जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने कॉम्पिटिशन होते हैं उसको खुद खेल रहा होता है, उसकी अपनी तरफ से होती हैं। उसके लिए हमने जो है वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि वो अपना स्टॉल लगाए, वहीं से वो बुलेट्स ले सके और वहीं से अपनी शूटिंग ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने 3 पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है तो वो आके अपने प्रैक्टिस करें ताकि मेरे पे कोई उनको नया सरफा मिले। तो ये सब के हमने एक ही जैसा स्टैंडर्ड रखा है ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इसमें जो पाकिस्तान जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन भेजी है तो जो कॉन्सुलेट्स में सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल हैं वो आएंगे, जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में करेंगे और जो सिविलियन है वो सिविलियन कैटेगरी में। जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आर आल्सो इनवाइटेड और लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल को करने का मकसद जो है मकसद ये कि हमारे लड़के, अब ये शूटिंग टीम का खड़े जाए, हमारी शूटिंग टीम के और इसके अलावा इंस्पेक्टर शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं कराची में, ये वो लोग हैं जो अब शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर आके अपने इंटरनेट में हिस्सा लिया। तो वो जो लोग वहाँ पे देख के आए, सीख के आए, उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनका कर रहे हैं। नॉर्मली ये मैसेज पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव मीडिया इमेज है, पता नहीं यहाँ पे होता है और सेफ नहीं है, तो इनके लिए मैसेज है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसे हम भी यहाँ पे करें और हम तमाम फोर्सेज हैं उस बीच में ये कोऑर्डिनेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन करने की। बाहर जगह से लोग आएंगे दिन अपने एक साथ मारेंगे शूटिंग में, तो एक लाइव मेमोरी होती है जो शूटर या वो जो टीम लेके जाती है और वो सेम की मेहमान नवाजी से मुस्तफीद होंगे, उसको एंजॉय करेंगे। तो ये पॉजिटिव इमेज है जो कि ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लिए हम दे रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर है, नॉर्मल, और हम भी वही यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि दुनिया में कुछ जगह पे होती है। There is no एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आप यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए, ये 2 कंडीशन और उसकी हिस्सा लेने के लिए। हमने देखा कि जब शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा तो आप लोग काफी एक्टिव थे, फोर्सेस भी बढ़ी, अब बहुत ज्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम, तो अब क्या ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं दोबारा से स्ट्रीट क्राइम में कोई एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी रिसेंटली 15 का जो काउंटर हुआ था, आपने विजिट किया, वो लोग कौन थे? वो एसएसयू ही ऑपरेट कर रहा है, एसएसयू की टीम वहाँ बैठी है। स्ट्रीट क्राइम में हमारा एज अ फर्स्ट जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कहीं पे अगर सेंसिटिव एरिया है, ज़्यादा है, तो हम उस पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाते हैं। मगर उसके अलावा जो 15 की सर्विस है दैट इज़ रन बाय द एसएसयू, उन्हीं से, और हम पब्लिक की मदद उसमें कर रहे हैं। उनकी एक हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है पब्लिक शहरियों में कि अगर 15 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आ जाती है और ये डेटर, ये खौफ क्रिमिनल्स के उस चीज़ को रोकने का बायस बनता है। तो हम अपनी कोशिश करें जहाँ जहाँ पे भी हम कर सकते हैं उसमें, और इसी तरीके से करते हैं। स्केटिंग फोर्स बिल्कुल बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद था कि जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ के लिए, अभी जैसे स्टेडियम वुमेन क्रिकेट टीम आई, अब जब इसमें हम पब्लिक के लिए खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए होंगे। जो स्केटिंग फोर्स का था कि शहर के अंदर जा नहीं जा सके या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे करें, मगर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, तो इसलिए उनको हमने लिमिटेड किया है। और 20 लोगों की टीम है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हम उससे, मगर मेनली उसने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए रखी। आप देखेंगे जब टीम होगी इनकी मैचेस होंगे, जब खवातीन आएंगी तो आप लेडी उसको भी स्केटिंग में देंगे, उनकी लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांड उसको देखेंगे। दैट्स फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली। बजट क्या है? दूसरा ये बता दीजिए कि कराची में हॉटस्पॉट बनाए गए थे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और ये कहा गया था कि ऐसे कमांडो वो पे रहेंगे जो थाना पुलिस है वो गरीब मौतों को देखेगी। कहीं पे भी एसएस कमांडो की गाड़ियां और जो पेट्रोलिंग है वो दिखाई दे, जिस तरीके से बताया गया 15 में मुकाबला किया और हमने रैपिड रिस्पांस किया, तो 15 की अगर बात अलग से होती है, लेकिन जो एसएस के कमांडो है हॉटस्पॉट पे खड़े होते थे, एक दो दफा जो है वो दिन शायद किए लेकिन उसको दिखाई नहीं दी। अब कराची पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसको अप्लाई करते हैं। उसका जो 15 ने स्ट्रेंथन की है वो एसएसयू के कमांडो से ही है, तभी ये पौधे कि 3 शिफ्टों में वो 24 से काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट आएगी मजीद तो हम इंशाल्लाह उसी जैसे हॉटस्पॉट्स को भी करेंगे, उसी तरीके से लोगों की मदद के लिए भी करेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से इसमें कोई बजट नहीं, जो आपकी फीस है हम उनका जो खर्चा वही डालेंगे, प्लस स्पॉन्सर्स का जो फूड इवेंट है वो है। फीस हमने 2000 फॉर यूनिफॉर्म पर्सन, 5000 फॉर सिविलियन पर्सन।
और फीमेल कैटेगरी की 2000 फीस। अच्छा, ये पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एसएचयू फॉलो कर रहे हैं और एसएचयू की जितने भी इवेंट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक पक्ष के लिए बायस फख्र है कि हमारा मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पलरी तौर पे पेश कर सकते हैं, जिस परफॉर्मेंस से खाली ना सिर्फ ये कि उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं बल्कि आगे लोगों के लिए भी हम एक रन है कि जब एसएसयू के जवान बेच सकते हैं बाकी पुलिस भी हो सकती है। तो एक बेहतरी तरफ एक हमारा एक है। इस टाइम हम परसेंटेज पे तो हम 2% है सिंध पुलिस, तो 2% हो गया, 98% मतलब पुलिस का बेहतर होना बनता है। इसी तरह अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी बेहतर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है पुलिस पे वो बेहतर हो सकेगा। जी, ये हमारा चौकंडी में एसएसयू का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं और वह सारा कुछ शूटिंग रेंज सारा कुछ वहाँ बनाया हो जाएगा। साला टाइम लगेगा, चीज़ों होने में जनरेशंस लगती है। एक उसकी तरफ है में आप देखें कि मोटर पुलिस का जो इमेज था वो कितना बेहतर होगा, उसी पुलिस के लोग जहाँ पे काम करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक भी उससे मुतमईन होती तरीके से एसएसयू की। तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को, मगर ये कि बेहतरी की डायरेक्शन पे हम चल, वक्त आएगा सारे लोग इसी तरीके से तौर पे काम कर सकते हैं। हम ये कर सके जो मेरे दोस्त हैं जिनके लाइफ वेपन है उनका आपस में मुकाबला कराएं, उनके लिए हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। अपने वेपन्स के साथ हैं, मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज आप अपने स्किल्स के वेपन्स के साथ आए, वहीं आपस में मुकाबला करें कि हम प्राइस की कैटेगरी करें। आपसे रिक्वेस्ट उस सर और अब होने वाला है, बहुत जल्द याद हो जाएगा, तो आपने इस पे काम किया, अभी हो जा रहा है, तो उसमें ना होना क्या आपकी लिंक है? इस हवाले से सामने चीज आ रही थी कि आपने चीज की थी एनआरटीसी दिया गया बजट और आप नहीं थे क्योंकि आप बहुत लो लेकर आ रहे थे। आईजी साहब ने जो है ऐसी को किया, इसमें क्या हो? उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सब लोगों को पता है। हम और इसमें कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ सपोर्ट करें, चाहे करे या वाई करे या जेड करे। हमने हमारे का ये फायदा हुआ कि हम डॉलर्स में प्राइस लगी, हमने वो मांग दिए जो लोगों के इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ करके हमने जो 200 मिलियन की कॉस्ट में कर दी, 100 मिलियन पे ही लॉग है, चाहे वो एम करे चाहे बीटी करे। उसका ये फायदा कि हमने डायरेक्शन सेट दी, हमने चीजें किस तरीके से हो, और हमने एक सिंपल एक पूरा एक सिस्टम बाहर लगा हुआ है, फॉलो करें तो हो जाए। तो इसी गाइडलाइन पे करें और इसमें जब ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा। इस चीज से हमने होपफुल है कि ये भी चीजें बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है, मैं बीटीएल मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे सेगमेंट में है इक्विपमेंट्स हैं और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, हम पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम, क्योंकि हम आप देख सकते हैं में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए एक क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि आपकी बोन के ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रांड्स हैं, जो यू ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, इस मशीन, ईटीटी मशीन, होल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास ट्रीटमेंट्स की मशीन हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे आपके सामने फिजिकली भी लगी हुई है, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वाले बड़ा ताउन किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड और मैं आया यहाँ पे, मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी, यहाँ सपोर्टिव है और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं कि पैसे चार्ज लेते, डॉक्टर्स चार्ज करते थे, तो फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, उस पे आ रहे हैं। इवन
BTC वाले भी आए हैं हमारे पास, जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, फाउंडेशन है। तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर से भी बात किया है। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये मशहूर होनी चाहिए। थैंक यू। Ladies and gentlemen, in a few months, I shall brief you upon the sales and the knowledge of the defensive port promotion and items. Many depending upon the business and organization by itself. Thereafter, we will have outcome which will take you through the journey of the depot and the activities of the items. There was released in 2000 under the Joint Staff Orders, which was later placed under the Ministry of Defence Production system that was working under the effort of MD. The basic aim was to promote and project Pakistan military's industrial progress and defence export potential. All functions of the depot are performed on corporate mode with no function burden on national exchequer. The winning statement, which has been spelled out through the depot, reads: as a national platform provides support to the defence manufacturing, service sector and the export chain promotion, facilitation and coordination for sustained growth of defence export Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDAS. Establishes Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had a unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions,
The depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains international standard space center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defence industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Right, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on the private defence industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defence Showcase without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different national and international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors, and the small-scale manufacturers, ready to link them with the large-scale manufacturers and our private and public scale production industries. Now coming over to the flagship event of Ideas. As you are aware, Ideas is the flagship event of international stage for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction with global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation that truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. There are the main objectives which are actually desired to be accrued out of the Ideas include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the national exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic effort in the realm of defence diplomacy. For this gentleman, with a brief introduction, I shall take you through a documentary which will actually show you both whatever I have spelled out about Ideas and the depot, how did it actually reach to this glorious time today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो ISO है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपो को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपो ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान में मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है
उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप प्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा हमारी एक्सपो पहला एक्सपीरियंस? कैसा रहा? जी नहीं अच्छा है। कुछ फायदा हुआ? हाँ फायदा तो हुआ, प्याज आलू वगैरह सब्जी में फल फ्रूट में बहुत अच्छा फायदा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में आपको फायदा हुआ है, तो ये आप चाहेंगी कि ये होना चाहिए बाहर? होना चाहिए बाहर। खासकर एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि जो वाइट कॉलर लोग हैं उनकी इज्जत नफ्स मजूर ना हो, तो ये हमने जो कोशिश की आपको पसंद आई? जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पे अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो फिर ये कुछ बेहतर है बचत एक्सपो? कुछ बेहतर है, इसीलिए तो यहाँ सेल करी है। ये तो सही बात है। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, माहौल है, होना चाहिए ऐसी, होना चाहिए ऐसा। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. इस दावर कामिल और ता क़यामत कम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फायज फरमा जिसका तूने उनसे फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। मैं अपने सेवन के साथ 2018 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 के इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद एक माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर। और लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जिसके बाद में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा सपोर्ट करना है, और इस एम के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ी ताकि हम दोबारा उसी लेवल से बेहतर हो पाए। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे पास पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड काम करते थे, बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and इतने अरसे they have improved a lot, and internationally actually recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत मेरा नाम असलम खान है, दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही, और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शरीक। पहली आइडिया यहाँ तक पहुँचे कि में 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं, और ऐसे भी हमारे तारे जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात। और मैं ये बताऊँ कि हमारे जो हमारा तैयार है JF थंडर 7, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी कर। माजी में अगर हम बात करें हमारा टैंक बहुत उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे, और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जो प्रोडक्ट है उसमें भी बढ़ रहे हैं मजबूत। और आज की ब्रीफिंग हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिल मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद कामयाबी के झंडे रहेगी, मजीद कामयाब हो, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर भाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हम कौम है उसके लिए ऐसे इत्मीनान है कि उसकी मुसल्लह अफवाज है वो पूरा तैयार, किसी भी दुश्मन की जाहिरिया मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरा तैयार और डटे हुए हैं। आइडियाज़ जो कि वैसे एक बाइनरी इवेंट है हर 2 साल के बाद, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 वजह से जब 2020 में इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के हो रहा है, तो उसकी वजह अभी की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा जाती है, और हम पूरी तरह इसके लिए थे, और हम उम्मीद हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलूँ कि हमने बहुत ज़्यादा एक जो फोकस किया है ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक प्लेट दें ताकि वो दुनिया में अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस। इसमें भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इसमें बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके इंटरेक्ट करें, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। फिर इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एडम्स उनकी भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं लोगों की कंपनियों के साथ, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को भी बूस्टेगा और हमारी जो हिस्ट्री है उसके लिए भी एक असर है। इस लेवल का इवेंट है जिसमें पूरी लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरह की चीज़ भी पाकिस्तान में इसका इनेकाद जाएगा, तो एक बहुत ज़बरदस्त बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक इवेंट करा सकता है। और तमाम अल्लाह का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वो सिक्योरिटीज नहीं है जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो
फ्लड के भी हालात हैं, उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इंशाल्लाह इससे होगा। इस पर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद कर रहे हैं, जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट कराया जाएगा, दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। लेकिन जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पर काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो आगे अपना काम प्रेजेंट करेंगे। ये प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमें अपने स्टूडेंट को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू कराची एक्सपो सेंटर, उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर अंदर का जो आउटडोर है और जो एग्जिबिशन हॉल्स भी है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमिंग को मीट करते हुए स्टार्ट पहले ही कंप्लीट करें। गवर्नमेंट के बारे में ये कहूँगा कि प्रेरणा हमेशा हमें मिलती ही है, पास मिली है, और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया, और वहाँ तमाम सिंध गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मौजूद थे। जिस तरीके से CM तरफ से इंस्टेंटली वो बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ में दिया तो बहुत हमारे लिए आसान है। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I am VP Sales at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. Come to Ideas the third time. We have been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of we have in the industry. We can what sort of capabilities we export and assist the other of the world with. I would also like to thank Badar Expo Solutions, because Badar Expo is basically organizing the whole event, and they're doing a very good job. We have launched 2 new products, SCUA MP and SCUA Mini at Ideas, which are binoculars with the LRF. This is SCUA MP mounted over here, which is a LRF based binocular that can be used in daytime or night time to give the photos image with the exact accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2020 जो कि वैसे एक बाइनल इवेंट है, हर 2 साल के होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 पे जब 2020 हम इसको नहीं कंडक्ट कराएंगे तो ये 4 साल बाद हो रहा है, तो उस वजह से अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम इंशाल्लाह पूरा इसके लिए तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 कंडक्ट कराया गया उससे मज़ीद बेहतर होगा, और नेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन की कन्फर्मेशन आ चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डेलीगेट्स आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे यूरोप, एशिया, इस तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया है वो कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसमें लेके आएँ, और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि के सामने अपना जो प्रोडक्ट शोकेस कर सकें। जिस पर भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्क आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं, कि जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEM, उनके साथ डायरेक्ट करें, उन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और इसके साथ ही साथ जो लोकल कंपनीज हैं एट टाइम जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर मुल्कों की कंपनियों में, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग हैं, बहुत हाई लेवल जैसे मैंने आपको बताया आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव मैसेज लोग यहाँ पर आएंगे, वो लेकर आएंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक इवेंट करा सकता है। और तमाम जो अलग है कि अब हमारे साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हुआ करते, और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद
इस तरह का एक इवेंट करना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं, जो कि बेसिकली 2 सेक्शन होगा, जिसका सेकंड टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद रहेगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उस जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो आगे अपना काम करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, तो सुनेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ जो वेन्यू है कराची एक्स सेंटर, उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जिबिशन हॉल्स का एरिया, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम है। और इंशाल्लाह हम अपने लाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही करेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा मिलती रही है, पास्ट में भी है, और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स वर हेल्ड एट सीएम हाउस। सीएम साहब काइंड थे, उन्होंने उसको शेयर किया, और वहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स जो थे, उनको जिस तरह से सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली, वो पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने साथ हमें दिया, तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं, तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन वही 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास कल से चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है, और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है 15 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पैशन बढ़ाएं, और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडस्ट्रिएशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। तो हम इसी तरीके से हम इस पूरे इवेंट के बाद जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उनका मकसद ही यही है कि उनको इस फोरम पे लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें। और इसके साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बदर एक्सपो और ट्रस्ट है और भाई जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के ये एक बंदे का कम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स दी हैं और ये भी टीम जो है वो मिल के इस पे काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप समझ सकते हैं वो कितना पीक आता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैच करती है। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के पदर को ट्रस्ट करते हैं। ये और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए। और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडिया का जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी इंडिया के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से अपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टैम्प बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर चेक किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू 3 हॉल हुआ करते थे, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स आइडिया स्टार्टेड। जी आई हैव हैड द ऑनर के मैंने को देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, हमारा 9 हॉल्स हैं इसके। तो बाकी एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपने इवेंट में रखा है से ज़्यादा डेलीगेशन को मेरे को दिखी है, काफ़ी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट भी एग्जिबिटिंग कंपनीज पाकिस्तान में है वो भी बहुत बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन, बहुत सारे और मुल्कों के पीएस में। मैं देखता हूँ जी कि जो इवेंट्स एग्जीबिशंस होते थे फॉर अ कंट्री पाकिस्तान, ये बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जब आप इवेंट कैपेबिलिटी हर 2 साल के आगे डेमोन्स्ट्रेट सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है आप वैल्यू कर सकें। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform exhibition to new. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. जूस वगैरह है। जूस और फ्रूट पे आप डिस्काउंट मिला? जी जी मिला, बाय 1 गेट 1 था जूस पे। फ्रूट में भी मिला? फ्रूट पे भी आधी कीमत पे था, बाहर जो मिल रहा है 100 रुपए मिले थे, 60 रुपए मिला तरबूज। तो ये अच्छा मकसद है कि रमजानों में फ्रूट आप यहाँ से खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल सही बात है। आप माहौल कैसा लगा जो बदर सॉल्यूशंस ने आपको प्रोवाइड किया? It's 5 p.m. मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियाज़ है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी चीज़ें 80 मुल्कों के लोगों शोकेस कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं तो आपस मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन पर करने की हमारी पूरी सलाहियत है, उसमें बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि खूब गुजरने के बाद आइडिया रहा और बड़े धूमधाम से हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ सब इंशाअल्लाह। मैं अपने इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी, और बाद से एक माशाल्लाह इट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी दोबारा उसी लेवल पे उसी बेहतर रह जाए। ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़, एंड पहली मरतबा जब ये आए तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड काम करते थे, बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है।
Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Singh, the Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organization, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honourable delegates, exhibitors, and trade visitors who travel from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unit government formed in April this year, the coalition government has been engaged in an effort to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr by the grace of God and the efforts of the government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic, that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact, the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot, and something that we all agree should never happen again in those of our governments come and go, political parties change. We should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient, people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and a sense of giving us stability in our policy, not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. For the past months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, culminating in our exit from FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, restoration of GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe Pakistan has ever seen. The monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event directly correlates with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis,
there is an opportunity. And we convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards construction and rehabilitation, we have to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. Our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement in technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institutional must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal.
For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and social economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations.
In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan, Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haider, the chair, distinguished panel members, General Arif, DG Defense Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some of the comments which I will now be sharing with you. One of the points that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in the end, in use of any technology. It can't be panacea for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over a board of 64 pieces, 32 pieces over 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data crunching and associating it with the happenings around the globe, how they are going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with the stocks
in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need lot of exercise to to understand. For a normal mind, it will need, okay, the flood has come in a certain area. How does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs, can reach that level quickly where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out. Now, taking these two examples onto the side, look at what is actually warfare and what is defense. War is a contest of opposing wills, but there are no rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decisions by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, the warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of AI is already in play, and we are not yet fully aware of it, but I think this is being played by the global players at various levels, and if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indian operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think, from what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one place to another. So, and so many mundane plans, those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some mix in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions that you make will remain human,
and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those information human beings cannot process at one time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be going to predict something which may go change study, and we may find that sometime in near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I'm certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings. And that is what we need to cater for. And as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you gave us. You have given us a lot of food for thought, and I'm sure all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Defense Minister, Badar Muhammad Asif, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a matter of great honor for me to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, galaxy of senior serving and retired officers from armed forces, our guests from national media, business group and government parties. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing the occasion to formally launch International Defense Exhibition Seminar 322, better known by its acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered into the National Defense Exhibition industry by organizing this idea in the year 2000 at Expo Center Karachi with 120 international exhibitors and 150 foreign delegates. In the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEA 2018, we had record participation of 524 exhibitors and 281 delegates representing 44 countries. And we are lucky that this year was recent and we had participation across the world. The opportunity to accelerate the idea got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst philosophy of our living. One journal, and some in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we learned how to do it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the edition of IDEA is scheduled from 15 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What about it? Despite a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of available space till today. Needless to say that year 2022 will be much bigger size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorables. IDEA has set itself an effective and grand contribution to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. In this sector, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world, placing Pakistan's defense production capability in the career of development, aimed at exploring the means of partnership in defense production through joint ventures, outside and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it is increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with regional and global partners. While on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact together, collaborate, cooperate to build defense ties and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make special mention of the DC of Commerce as well as the Trade Development of Pakistan for their all-out availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like the Ministry of Communication and Directorate of Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th August 2022
signifying holding up a lemon of ideas in 75th year celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the government and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his undying efforts and partnership. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthies for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad.